Good morning, everyone. Good morning. Good morning. Good morning, Ram Maitri. Good morning, Sureshji. Good morning, Ram Sardar. Good morning. जो भी डाउट्स है पूछ लो. We will start the streaming in 2 minutes. Good morning, Shreyas. Good morning, Varun. Good morning, Sudhir. Good morning, Shrikant. Nifty short, BTC long post target completion of yesterday and gold long one running with 1,000 pips, another one with third. सही चल रहा है. Thank you so much for the guidance. No worries. Keep it up. कोई डाउट से पूछ लो. We are waiting for one member to join in. हमेशा लेट करता है. Good morning to you. How are you? कल गोल्ड बाई किया क्या? भाई कल गोल्ड बाई किया. What a beautiful thing, huh? हमारा एड ऑन चल रहा है 900 के साथ. आप पूछ रहे हो गोल्ड बाई किया. अगर कल की लाइव स्ट्रीम पे जाओगे शेयर्स चेक करोगे. ये एलजी पॉइंट में ही हमने बताया था कि मार्केट
will take a action plan till 85. First target as 60, second target as 85. In this position अंकित ने उसी टाइम पे एक मैसेज किया था कि अब 42 का भी एलजी लेगा. Market took the LG of 42, created a three-wing setup. With three-wing setup, S2B1 setup, both executions was done at this point. Third execution was taken at the intact level. Fourth execution again with the LG point. So सिर्फ कल का ही ट्रेड चल रहा है. आज के लिए अभी तक ट्रेड ऑफ एग्जीक्यूशन बिल्ड नहीं हुई है कहीं पे भी. सो अगर बिल्ड होता है डेफिनेटली विल लुक फॉर एन एग्जीक्यूशन. So swing trades are activated, but rest all is in proportionate on ID. ID trades कल क्लोज हो गए थे. स्विंग चल रही है. भाई अगस्त हर टाइम लेट मत करो यार. Okay, so what should be the next plan of action for today? Market इस point of action से क्यों rejection ले रहा है? Because it is a daily time frames intact level, right? Market intact होके rejection दिखा रहा है जो कि sustain नहीं होना चाहिए at the current place. मतलब अगर मार्केट कन्वर्ट होना है कन्वर्जन पे तो what does the market has to do? Market has to give a drop, one up point continued with the drop unallocation. Drop unallocation के साथ what is the next thing that we have to be focused on? Then continuity in the movement. कल के दिन की जो लॉन्ग पोजीशन में जो शॉर्ट की गैप इंटैक्ट क्रिएट हुआ है वो गैप इंटैक्ट को कंप्लीट करना है. उसके साथ ही ट्रेड ऑफ एग्जीक्यूशन फिर से एड ऑन्स होंगे लॉन्ग के तरफ, उससे पहले नहीं. So what are the major things that needs to be taken under the consideration at the current scenario? Scenario 1, come to 1 hour. Scenario 2, what is volume indicating? कल पूरा दिन क्या क्या एशियन सेशन में एक हाई वॉल्यूम डेवलप हुई थी, उसके बाद पूरा आइसबर्ग, राइट? सो कीपिंग इन माइंड न्यूयॉर्क सेशन में एक ड्रॉप अलोकेट हुआ था न्यूज कैंडल के साथ, not taken under the consideration. Market created a surplus, continued in the direction. With that, again the market is in the zone. With this formulation, what do we notice? आज के दिन में do we have a high volume? Yes, definitely. One high volume has been there in an Asian session. तो इस प्रोपेगेंडा में क्या हमें देखना चाहिए मेजरली is only two things. मार्केट को विक क्रिएट करने दो, बिना एलजी ड्रॉप करने दो, लिक्विडिटी हंट होने दो. 15 मिनट्स में वो लिक्विडिटी ग्रैप पॉइंट है, बट 1 आवर में ये इंटैक्ट जोन है. अगर ये इंटैक्ट जोन ऑफ एक्शन में हाई वॉल्यूम डेवलप होती है, राइट, विथ अ रेजिमेंट अलोकेशन ऑफ TTS 2.0, we will look for an add-on again, not prior to that, right? Keeping in mind 1 आवर में भी एक इंटैक्ट लेवल है जो कि which is at 4081, which will play one of the major roles to hunt today. अगर वो hunt होती है then we will look for again add-on. So at the current stage मैं add-on करूंगा तो सिर्फ ID के लिए देखूंगा, swing के लिए नहीं. Keeping in mind we have lot of intact levels. Sorry, my bad. My bad, guys. Right? So in the allocation perspective, what are the two major things that we have to look? कल की एशियन सेशन में जो हाई वॉल्यूम आया था, राइट, इस पॉइंट ऑफ एक्शन पे, ये हाई वॉल्यूम होने के बाद पूरा दिन मार्केट आइसबर्ग जोन में था, करेक्ट?
So market was in a direction. Then we got one new high volume generating. New high volume generation के साथ we had taken an execution towards and short for an allocation. Trade नहीं थी, सिर्फ retracement point allocation का हम देख रहे थे. Exactly 200% से rejection लेके continuity पे add on. This candle will not be taken under the consideration because news candle hai, and coming candle indicated a strong movement which was in the direction. Okay. So with this, पूरा न्यूयॉर्क पीएम सेशन फिर से आइसबर्ग जोन में डेवलप हुई थी, राइट. विद दिस डेवलपमेंट व्हाट डू यू नोटिस? आज के दिन में आइसबर्ग जोन होने के बाद एशियन सेशन में एक हाई वॉल्यूम कैंडल डेवलप हुआ है. अगर मेरे को यहाँ पे विक क्रिएट करके ड्रॉप में अलोकेशन दिखता है तभी मैं एग्जीक्यूशन देखूंगा शॉर्ट के लिए, फॉर द हंट ऑफ फर्स्ट इंटैक्ट लेवल विच इज एट 4099 and then the liquidity grab movement which is at 81. Okay, so this will be the plan of action with a consolidative price action of TTS 2.0, right? अगर मार्केट यहाँ से ही लॉन्ग के लिए इंडिकेशन देता है, रूल्स इज वेरी सिंपल. आईडी ट्रेड्स होंगे, स्विंग कन्वर्जन्स नहीं होंगी, right? Because without liquidity grab candle creation, without a proper volume indication, no execution will be taken under the consideration for holdings. That could be the prospective one which will be followed at the current stage. Keeping in mind with that, what are the next steps that needs to be looked at? 15 minutes. In 15 minutes, if the development is at the point which is the ID level, on the closure of that, with the conversion, we could look for an allocations, not prior to that. Minimality M2 possibilities ऊपर है. So setup formation के साथ the first completion will be of 250 pips today. Then the drop for the LG points and other allocations which has been allotted in the possible point. This will be your MTSL for the swing trades. What has been carry forwarded from yesterday. Take home should be of 900 pips of the bottom swing, and the second swing add-on which is running at 900. Take home plan of action should be of 750 pips. Any doubts in this, guys? So first plan of action हम लॉन्ग के लिए देख. ओ आप देखो ना, सेटअप बनता है. टारगेट 250 पिप्स के ऊपर मत देख. नेक्स्ट 12 मिनट में 1 आवर का कैंडल भी क्लोज होगा. So precise allocations will create a much accurate entries. So wait for next 12 minutes for an executions. Don't go against it. ठीक है? Thank you for Nifty trade yesterday. No worries, Faiza. कोई भी doubts है gold में? Please do ask. What is current situation? Current situation is like print money. No other situations at the current stage. Rules follow करो. Risk to reward पे executions दिखाओ. With the risk to reward executions, be in the directions of the market. Remove the FOMO aside and put fear into a baggage and throw it into a dustbin. ग्रीड दिखाओ अगर सेटअप के साथ है. अगर पीओआई रेंज कंसोलिडेशंस में मार्केट है तो शांत बैठो.
That's the only simple rule what we'll be following for today. Tuesday है, एशियन लंदन कंटिन्यूसली मूवमेंट अलोकेशन में तो नहीं रहेगा, राइट? सो प्रोपेगेंडा मूव्स दिखने को मिलेंगे, रिटेलर्स को नया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्रिएट करने को दिखाएंगे, उसके बाद कंटिन्यूटी इन द डेवलपमेंट दिखने को मिलेगी. दैट कुड बी समवेयर इन न्यूयॉर्क सेशन. ओके, ये जोन थोड़ा ज्यादा ही है वो. Yeah. 150% रिजेक्शन के नीचे तो अगस्त या थोड़ा नीचे लेकर. Good morning, Amika. How was your world tour? After a very long time. मजे में. सही है. Which was the last destination? Last week कहाँ पे थे? Oh, beautiful. 6 months. Not bad at all. So just wondering, what are your working hours? Adding LTD businesses and all, or just trading? I sleep for 4 hours. Just trading as seems like you keep eyeing on the charts all the time. No, no. Alerts, I work on alerts because charts के ऊपर ध्यान रखूंगा तो दूसरा काम नहीं हो पाएगा ना. Yes, ma. 20 hours, so you are a robot. Then all the multimillionaires and billionaires are robots. And all 9 to 5 workers are human beings. जो ज्ञान देते रहते हैं वर्क लाइफ बैलेंस सब चाहिए.
पैसे कमाओ यार, उसके बाद वर्क लाइफ बैलेंस ऑटोमेटिकली आ जाएगा. लिमिटेड सोर्स ऑफ इनकम में आपको चाहिए वर्क लाइफ बैलेंस, कैसे मिलेगा? Sir, can find fixed by trading your tools. Hey Peter, very good afternoon. How are you doing? I heard that from morning shift you have been moved to the night shifts. All good. सुरेश जी, यहाँ पे एक स्केल करके दिखेगा, देखिए दिस पॉइंट, ये स्केल को यूज कर सकते हो. Oh, that's nice. Extremely not in Australia today. Great. I got that. Well, it's currently running at 22, 25. Between sir was going off the topic as it's really fun when you talk apart of from trading. कभी कभी off topic हो जाया करिए. Definitely हो जाएंगे. Smart. सेटअप देगा तो डेफिनेटली ट्रेड करेंगे, सेटअप नहीं देगा तो डाउट्स पे फोकस करेंगे. अगर डाउट्स भी नहीं पूछेंगे तो ऑफ टॉपिक जाना ही पड़ेगा. एंड गाइस, पीपल हु आर वर्किंग इन ऑफिस, एक सिंपल प्लान बताता हूँ, आप लोग ये फॉलो करो. जिनका भी सैलरी अबव 1 लाख है, जिनका भी सैलरी अबव 80,000 है, जिनका भी सैलरी अबव 50,000 है, राइट? स्मॉल रेंज लेके चल रहा हूँ. आई नो पीपल हु आर हैविंग सैलरीज विद 15 lakhs also sitting in YouTube. So this is only for this range of bucket. Vidyarthi ji, Shaloni, Praveen, this is not for you guys. Okay? So start a systematic withdrawal plan, which is called as SWP, followed through with 3 months of saving deposit. This is for 1 lakh allocation, right? So with this, what you have to do is you have to put the 3 months of allocation into the SWP, and monthly you withdraw some amount out of it,
and let the 3 months of your corpus get builded at the range of 12% to 13%, right? Risk free. Second, people who are earning 80,000 rupees and above, for them, create a HWF hybrid model of mutual funds, which gives you a risk free interest of 12 to 14% year on year. Deploy 20% of your monthly earnings in that, right? People who are earning from the range of 50,000 to 80,000 work on ETFs, which is in pursuant of 10% of your monthly income, which will be going into ETFs of Nifty or gold, right? Gold bees karke ek hai. So on that proportionate. So every month on month, 10% will be deployed, which will be a growth percentage of 8 to 12%, depending on India. If India grows, your ETF will grow, right? So the return allocation per year is of 8 to 12% and deploy the valuation in pursuant of the thing which you are making sure that you are enjoying. Transfer that money here. Enjoyment के लिए कम रखो पैसा starting में. Once the growth of compounding corpus starts, then start enjoying. I don't have problems. Okay, so this three is what you guys will be following for coming 1 year and see the growth in the account, see the growth in the balance, see the growth in the corpus. So this will be the plan of actions which you guys will be working on. If it's less than 50,000, simple, normal mutual funds. 8% of your earnings will be deployed in our mutual funds, which is not hybrid, which is not risk free. Allocate the trade off, allocate the mutual funds in the portfolios where the return is in between 7 to 13%, with the deployment capital of your earnings per month is of 8% of whatever you earn in that month. Okay. फुल टाइम ट्रेडिंग करने के लिए क्या करना चाहिए? पेशेंस डेवलप करना चाहिए, फियर को हटाना चाहिए, फोमो में कभी नहीं रहना चाहिए, वेट करना आना चाहिए, सेटअप्स के साथ एग्जीक्यूशन के लिए द वन एंड ओनली थिंग यू वांट टू बी ए फुल टाइम ट्रेडर, waiting, patience. If you have patience to wait till your execution point of interest, then you can be in that and execute in the directions. अगर जिनको भी ट्रेडिंग फील्ड में आना है, work as a business. 6 months of the backup salary should be kept in your account. With that, the corpus of whatever the capital you will be working on. With the corpus, you need to have 3 months of allocating funds of trading. अगर ये चीज कर सकते हो तब जाके फुल टाइम ट्रेडिंग में आना, वरना नहीं. अकाउंट में सिर्फ 1 महीने की बैकअप रख के प्लान ऑफ एक्शन डेवलप कर रहे हो, don't come full time, do part time. Clear? So which entry is best? Buy or sell 150% or 200%?
So which entry is best? There is nothing called as which entry is best. Setup formations. TTS concept is just not by one level or two levels. So TTS concept follows with major allocating points with seven categories. One, TTS 2.0, mathematical calculation, MC. Two, followed with supply and demand. Three, surplus allocations followed with minimality. Four, volume hybrids. Five, high calibration point. Six, POI range. Seven, screening. Eight, liquidity allocations in pursuance of grab and point of interests. Nine, substandard circulating supplies. 10, three wing and S2B1 setups. So these are the categories put together is one TTS. Okay, Madly? क्या है comment? मूवमेंट होने के बाद कोई भी बोल सकता है कि मैंने 1000 पिप कैप्चर किया है. अच्छी बात है. सुन के अच्छा लगा. सर कहाँ से कमेंट्स पढ़ रहे हो? कौन सा? रिसेंट कमेंट यूट्यूब से ही है.
दूसरा कमेंट जो है वो एलटीडी सेशंस का है, अंबिका अगस्त्या का सब, वो जूम पे होता। थैंक यू, यू आर ग्रेट टू। हाँ वो यूट्यूब का ही है। स्पैम कमेंट्स गेट्स हाइडेड ना। आप भी स्पैम कर दो, आप भी हाइड हो जाओगे। क्या नाम है वो? तो नाम है, अजीब नाम। AVJC 783। कोई भी लाइव स्ट्रीम उठा के देख ले जनाब। एंड जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों को दिखा भी देता हूँ। वर्षा कल का चार्ट डालो यार, जहाँ पे स्क्रीनशॉट्स। हमको आँख खोलते हैं, रुको ना उसमें। वही सवरीस। IST में है, राइट? 911 LG पॉइंट। ओके, फर्स्ट, राइट? LG पॉइंट यहाँ पे ही है, सेटअप 1 सेटअप 2 एग्जीक्यूशन। टाइम 207, 200 pips running. Next, 330 pips running, 251, 50% exit on the ID trades, rest on MTS. Close 25% of the ID trade at 629, 450 pips running, right? न्यूयॉर्क सेशन का गोल्ड लेवल शेयर हुआ था 723 पे। रिजेक्शन पॉइंट देख लो, मार्केट कहाँ पे है?
4076 चार्ट पे भी दिखा दूंगा. ओके, एड ऑन का 200 pips रनिंग विद एन इंटैक्ट. Exact rejection from 4070, continuity in the movement, right? 828, carry forwarded with 260 pips on the continuity. Intact level का trade of execution था. एट 230 pips, उसके बाद 250 pips सेम कैरी फॉरवर्ड में. Add on 260 pips 9 o'clock, right? Add on 260 pips, exit all the add-ons and remaining 25% of the trade and let the 404 trade run fully. Running at 550 pips, TP2 hit 650 pips at 10:13. Exit all IDs and let the swing run. Date देख लो, November 25th, 842 level. $900 pips running, TP1 hit, exit 50% and let the remaining run with strong MTSL. MTSL is mentioned here. That's it. Let the swing run का मैसेज जो previous chart में था उसका running with 1140 pips, MTSL as mentioned on the chart. अब बताओ Mr. AVG's 783. Good morning. I'm in BTC trade from 585 600 as entry point. What should be my SL and MTSL? Is this summer? Your name is changed, is it? I remembered through your Iron Man post. How are you, Samarth? How was your vacation? 85 600 as entry point. What should be my SL and MTSL? Your system trailing will be at 86 952. Okay. MTSL point will be at 87 500. Okay, Samarth. Allocate it in 1 hour in perseverance. No change in mode.
no drop loss. Action plan 1, right? Redevelopmental structure, high wick range, break and continue, 150% rejection, but yet 200 not completed. Change in character, conversion allocation, supply converted into demand, demand converted into supply. So my supply will be converted here in pursuance of demand. 1, break and continue, 2. Okay, so this will be the plan of action what you'll be following. Sustainability with a proper Trishul formation, candle closure in next 38 minutes, rejection, you can look for an add-on, continue for the trade. Target will be 90,000. फैजा रुक जाओ यार, आपका अलोकेशन ही बहुत गलत है, कहाँ से मैपिंग ले रहे हो? स्क्रीनिंग करो ना सही से, डू द स्क्रीनिंग राइट. यू वेलकम सर. If you want to follow a protect and development plan of action, you can do one thing. If your lot size is above 1, you can look for an closure precisions on deployment below this. Right? फिर से setup create होता है, then execution from the plan of action. So you can do this as well in the second allotments. If you are followed through on compounding the structure. Again achieved a milestone from $40 to 470 running. Thank you for teaching discipline and how to understand markets. Keep it up, Saman. Great job. He's the same person who did $20 to $7,000. Back in track. Good.
Sorry, my bad. Learned the lesson. Don't repeat it. That's it. अब बताओ. First come first serve 200% hit. First come first serve 1 2 third. Second serving. One serving. Two serving. Three serving. So first come first serve होने के बाद second serving layout roll. Exact. अब लॉन्ग की तरफ क्यों देख रहे हैं? मैं लॉन्ग की तरफ देख ही नहीं रहा हूँ भाई गोल्ड में. हर्षित, मेरे को इधर देखो इधर. ये वाला और ये वाला लिए बिना मैं लॉन्ग की तरफ एड ऑन देखूंगा ही नहीं. कुछ भी हो जाए. जो कल से चल रहा है वो चलने दो. एमटीएसएल हिट होगा होने दो, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है. मैं आईडी में ट्रेड करूंगा बट बिना सेटअप के मैं शॉर्ट के तरफ नहीं देखूंगा या लॉन्ग के तरफ भी स्विंग में नहीं देखूंगा. माय सिंपल रूल. आईडी में 250 पिप्स इसके लिए बोला है क्योंकि एम टू 200% ऊपर है उसके लिए. नहीं तो आई डोंट हैव एनी काइंड ऑफ current agreed allocations towards long. Let the month come down, movement develop होने दो, उसके बाद setup create होता है, well and good. उससे पहले I'm not interested. So this month I have done a lot of back testing all through. I haven't made any profits this month, but I'm positive for the coming months. Great, Usman. ओ मैडम अंबिका जी, आज ही तो लैंड हुए हो. शांत हो जाओ थोड़ा. क्या पंचिंग हो? कम करो लॉट साइज. फर्स्ट वीक थर्सडे तक लॉट साइज कम करके 800 पे लो. आते ही अंदर आते पंचिंग शुरू. लेडी ऑन फायर.
Sir, which swing point high or low you took for 2.0 target? For high, low, okay, which swing point high or low you took for 2.0 target? लॉन्ग के लिए पूछ रहे हो या शॉर्ट के लिए पूछ रहे हो? अगर लॉन्ग के लिए पूछ रहे हो तो जहां पे एलजी पॉइंट मार्क किया था उसी पॉइंट ऑफ एक्शन पे है. शॉर्ट के लिए पूछ रहे हो ऑन दिस रेड कैंडल क्लोजर. ये डुअल रोल प्ले करना बंद कर दो वरुण. Stream will be there for next 5 minutes. Joe will outside, please do ask. Currently in Mumbai, settled in Dubai. Vacations पे आया हूँ. आपका सिस्टम फॉलो करके फुल टाइम ट्रेडिंग कर सकते हैं. सर व्हाट इज एमटीएसएल? माइंड सिस्टम ट्रेड. दिमाग में एसएल को ट्रेड करके चलना. Example, if you have placed an allocation perspective of movement 100 pips, सिस्टम पे 40 पिप्स में टीएसएल होगा, दिमाग में 80 पिप्स में एमटीएसएल होगा. All the new members, जो भी setup follow कर रहे हो, जो भी analysis follow कर रहे हो, जो भी formulations follow कर रहे हो, दिमाग में एक ही चीज रहना चाहिए. 6 months of back testing, 6 months of forward testing, 1 month of live analysis, then come with a smaller capital, deploy, build the capital. While building the capital, protect it with proper risk rewards, following no greed, no fear, no FOMO. FGM. With that, it's your hard-earned money. Learn to protect it. Don't come into the traps of manhandling accounts, giving the accounts to someone to trade, following the tips. Your money, your learnings, your execution, your mindset, your analysis, your trades. लॉस होगा तो भी आपके ऊपर,
प्रॉफिट होगा तो भी आपके ऊपर. That will get you the growth in this business, not by following by tips, not by following by giving it to any manhandling people. So protect your account, protect your capital, learn before you earn. Once you learn, earning will be more easier and more beautiful. This is Nitesh signing off. मिलते हैं अगली सेशन में. तब तक के लिए टेक केयर. बाय बाय.